Today we enter a world where impossible numbers becomes possible. That is complex numbers. And surprisingly, the complex numbers, it helps in engineering, in computer science, as well as for the quantum physics and for the mobile communication. So if you are talking about the introduction for the complex numbers, do you know what is iota? Iota is a new term which is going to highlight for the complex numbers, but the complex numbers is going to be represent like a plus iota b, जहां पे मेरे पास एक रियल वैल्यू होगी और दूसरी मेरे पास एक इमेजिनरी वैल्यू होगी. तो दोनों जो वैल्यूज हैं आपके पास, ये आपको क्या शो करेगा? दिस विल शो दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. In real value and the complex, no real number square gives complex. No real number square gives complex. So mathematician created a new number. Mathematician ने नया number create किया, that is iota. This is called the iota here, and iota term is to be root of -1. This is called the iota. Iota is going to represent for -1. So power of iota square. If we are talking about the iota square will give you the result, that is -1. Iota cube, that is iota square into iota. Iota square is -1 into iota. Answer is to be minus iota. Iota 4, iota square into iota square, which is equal to -1 multiplied by -1. Answer is 1. Right? Like if we are talking about let's talk about the example. For example, iota raised to the power 25. So 25 is there. If we are going to divide 25 by 4, अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब मैंने यहां पे आयोटा निकाला, आयोटा स्क्वायर निकाला, आयोटा क्यूब निकाला एंड आयोटा 4 निकाला, तो इनकी जो टर्म्स आती है वो आगे, अगर मेरे को लाइक सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आयोटा 5, तो आयोटा 5 का जो रिजल्ट होगा वो आयोटा 1 के इक्वल होगा. Right? It means it will give you the result for the iota there. तो iota 5, iota 6 is for the iota 2. Right? तो 4 के गैप पे 4 पे आपके पास क्या बन रहा है? इवेंचुअली एक आपके पास वैल्यूज क्रिएट कर रहा है जो आपके पास सिमिलर वैल्यूज को बताता है आफ्टर 4 रिपीटेशन ऑफ द 4 देयर. राइट? तो अब आई एम टॉकिंग अबाउट द आयोटा रेज टू द पावर 25. तो 25 है, 25 को डिवाइड कर लो 4 से, तो कितना आ गया? 6 4 जा 24 इज देयर, रिमाइंडर इज 1. अगर रिमाइंडर 1 है तो इससे मेरे को ये पता चल गया जो रिमाइंडर 1 आया था आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? आयोटा. राइट? क्योंकि आयोटा 4 + 1 रिमाइंडर, राइट ना? 4 से अगर आपने किया तो 4n + 1 यानी कि 6 + 1, 4 6 24, 24 + 1 इज द रिमाइंडर देयर. ठीक है? तो रिमाइंडर जो आपके पास आ गया वो 1 आया. तो 1 के लिए जो होता है आपके पास हमेशा आंसर क्या होता है? आयोटा. आयोटा रेज टू द पावर 1, आंसर इज आयोटा. आयोटा रेज टू द पावर 2, आंसर इज -1, देन माइनस आयोटा एंड देन आंसर इज 1. तो ये 4 वैल्यूज आपके पास रिपीट होती हैं कंटिन्यूसली फॉर द कॉम्प्लेक्स numbers, where we are going to find out the values for the power, whatever the power is to be there. Iota raised to the power 100, iota raised to the power 200, iota raised to the power 999, whatever the terms. Just your first step is to be there, just go and divide. Right? Okay, now moving for the example for the real and imaginary parts. Right? So complex number is a plus iota b. It will give you the real term, it will give you the imaginary term. Example के तौर पे 3 plus 2 iota, right? Where 3 is the real number and 2 iota is the imaginary number, right? Now there are few operations is to be there. If we are talking about the operations
operations is to be a plus b, right? Agar if you are talking about the example 2 plus 3 iota plus 2 plus 3 iota, what will be the answer? 2 plus 2 plus के 3 iota plus 3 iota, your answer is to be 4 plus 6 iota, right? Similar case for the subtraction. Okay, but if you are talking about the multiplication operation, that is a plus iota b multiply by a plus iota b, right? Example के तौर पे similar example is there, 2 plus 3 iota into 2 plus 3 iota, right? What will be the answer? Multiply, then multiply 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 iota plus के 2 3 जा 6 iota plus 3 3 जा 9 iota square. What is the result there? 12 iota. 4 plus 12 iota plus के 9 iota square की value, we know the iota square value, right? If we are going to check, look, iota square is -1, so we are going to put the value for the iota square is there, that is iota square. Iota square की जगह आ गया -1, तो कितना आ गया? That is 4 plus के 12 iota -9, right? तो -9 plus 4 is 5, that is -5, तो -5 plus 12 iota, which is the required result, right? This is for the multiplication. If you are talking, you know, if we are just going to take the other example, that is 2 plus iota and 3 minus 2 iota. 2 plus iota, 3 minus 2 iota. Okay, so your first step, 2 3 is 6, that is minus 2 2 is 4 iota is there, plus के 3 iota, and plus minus is minus 2 iota square, right? Yes, then minus 4 plus 3, that is -1, so 6 minus iota minus के 2 iota square, put the value for iota square, that is -1. So the answer is 6 minus iota minus के 2 into minus के 1, minus minus plus is there, so 6 minus iota minus minus plus 2, that is 8. Answer is 8 minus iota, which is the required result. So you can easily find out the value for the complex, like it will give you the real and imaginary values, right? This one is the real and this one is the imaginary. Right, real and imaginary values is to be there. Okay, now if we are talking about the quadratic equation, right? Quadratic equations के जो connections हैं आपके एक किसी complex number के लिए, like can every quadratic equation be solved? My question is to be arise, जितनी भी quadratic equations हैं आपके पास वो solve हो सकती हैं? Can, right? So like if you are talking about the examples, if you take one example, right, then that is x square plus 2. I'm talking about the quadratic equation. Okay, go with the example first. X square plus 1, which is equal to 0. X square, which is equal to plus 1 will shift to that side, it will give you the -1 there, right? But मुझे x square की value find out करनी है, तो what is the value for the x square here? X square is -1, right? मुझे अब x की value निकालनी है, तो root will, right, shift to that side, so it will give you the imaginary numbers, that is x, which is equal to plus minus iota. This is the value for the x here, right? See, this equation has no real roots. Basically it has no real solutions, but in complex number, इस complex numbers में it has two beautiful roots, and what are the roots there? That is plus minus iota. Let's go for the another example. Okay, x square plus 4x plus 13 is equal to 0. X square plus 4x plus 13 is equal to is equal to 0.
Now I have to find out the roots for this equation, but we know the quadratic equation, that is x is equal to minus b plus minus under the root of b square minus 4ac divided by 2a, right? This is the discriminant formula is here, so we can find out the d, basically this is called the d, right? Discriminant is there, तो d की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो आई कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू फॉर d, दैट इज 16 माइनस 52, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac, योर आंसर इज टू बी देयर, दैट इज माइनस 36 आई गेस, राइट? यस, माइनस 36 इज देयर, तो d की वैल्यू मेरे पास माइनस 36 आ गई. इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू इन द अबव वन, द आंसर इज टू बी लाइक माइनस 4 प्लस माइनस 6 आयोटा, माइनस 4 प्लस माइनस 6 आयोटा, क्योंकि माइनस के 36 इज देयर, तो इट विल गिव यू द माइनस 36, राइट? तो प्लस माइनस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आयोटा, राइट? डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a, दैट इज 1, दैट इज 2. तो योर फाइनल आंसर इज देयर माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा इज देयर. तो बेसिकली नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होगा तो उसका कॉम्प्लेक्स रूट आपके पास आएगा. ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ एप्लीकेशंस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके, वो रियल लाइफ के एप्लीकेशंस में हम लोग उनको कहां पे यूज कर सकते हैं, या हम उसको कहां पे वेयर इट विल गिव यू द परफेक्ट रिजल्ट्स इन ऑल. इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज टू बी देयर सिग्नल प्रोसेसिंग, क्वांटम मैकेनिक्स, AC circuits, as well as computer graphics is there, right? Complex numbers may look imaginary, but their applications are very real, right? So basically this is the complex numbers, right? Complex numbers अब जो है आपके पास इस फॉर्म में होते हैं, a plus iota b के, a simple recapitulation is there. और ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, दिस वन इज द रियल पार्ट एंड दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट इज देयर, राइट? यस, मैथमेटिक्स टीचेस अस समथिंग ब्यूटीफुल, मैथमेटिक्स टीचिंग अस समथिंग ब्यूटीफुल. इवन impossible things can exist in another dimensions. When real number fails, complex numbers begins. Thank you.